Okay, so in the first part, we discussed synthetic division method, right? So obviously, we'll do one more question on it. So write down, given, given x equal to 2 is the root of 84x cube minus 157x square minus kx plus 78 equal to 0. Find the value of k, and also find the other roots, using only synthetic division method. कोई और method नहीं लगाएगा. Obviously, since you have learned a new method, you need to use it. Otherwise, what's the point of learning it? So please. I'll repeat the question. Given x equal to 2 is the root of 84x cube minus 157x square minus kx plus 78 equal to 0, then find the value of k and the other roots using only synthetic division method. Come on. You've already done this in your CBSE batch, so not a big deal. Alright, I think sufficient time. Now, I have been given that x equal to 2 is the root of this equation, and I need to find the value of k. K is here, right? Given as x equal to 2 is the root, that means if I replace x by 2, the equation will be satisfied, right? So I'll do the same. I'll replace x by 2, right? So this is 84 into x cube. X is 2 now, so into 2 cube. Minus 157 into x square, so that is 2 square. Minus k into 2, so shall I write just 2k? Yeah, minus 2k plus 78 equal to 0. Right? So 24 into 2 cube, 84 into 2 cube, I can say that is 84 into 8, and I can say that is 672 minus 2 square I can write as 4. Right, so this is hopefully, right, yeah, 628 minus 2k plus 78 equal to 0. From here, you can easily find the value of k, which turns out to be 61. Right, I'm sure इसमें तो problem नहीं है, right? So my equation becomes, this equation becomes 84x cube minus 157x square minus 61x plus 78. Equation की जगह मैंने polynomial लिख लिया, right? मुझे क्या निकालना है? The other roots. Obviously, one of the root is 2. I need to find the other root. अच्छा अगर x equal to 2 इसका root है, तो factor क्या होगा? x minus 2, right? X minus 2. All right. So basically, I need to divide this polynomial by x minus 2. Right? That's my aim. वो तो मैं easily divide कर सकती हूँ using the synthetic division method. Right? So first and foremost, I will write the coefficients of dividend. So 84, and then it will be minus 157, then minus 61 and 78. Right? And then, since I need to divide by x minus 2, यहाँ पे minus 2 है, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2. Done? Alright, so let's apply the method. Now, 84 as it is, 84, and then 2 into 84, that is 168. Now, I'll add the 2, that is 11. Then 2 into 11, that is 22. Then I'll add the 2, that is minus 39. And then I'll multiply, and that will give me minus 78.
I'll add this is 0. And I know that the last column is the remainder one. Now, question क्या होगा? 84x square, right? Yeah. Plus 11x minus 39. This will be the quotient, or I can say the other factor. Now, अब मुझे बाकी के रूट्स निकालने हैं, बाकी के zeros निकालने हैं, right? That means I need to factorize this, and I'll get the answer. अगर factorize नहीं भी हुआ, even if you are unable to split the middle term, complicated लग रहा है, you can always use the quadratic formula. Now, I hope you can finish this on your own. I'll tell you the answer. The other roots are minus 3 by 4 and 13 by 21. You can finish this problem on your own and then check the answer. Done? Alright. Let's move on to the next one. It is an interesting one. So write down. Express x square plus 5x plus 7, x square plus 5x plus 7 in powers of x minus 3. In powers of x minus 3. Think about it. Come on. It's just language, that's it. अच्छा अगर मैं तुम्हें पूछती write or express the polynomial in terms of powers of x, तो तुम कैसे proceed करते? सोच लिया? Now just think, I'm replacing x by x minus 3. Come on. In fact, this is already expressed in the powers of x, right? But my question is expressed in powers of x minus 3. X minus 3. अच्छा बताओ, अगर मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, सपोज इसको, राइट? कैन यू से x minus 3 whole square? आ सकता है? somehow x minus 3 whole square apply कर आ सकता है इसके अंदर, right? Obviously all terms भी होंगी, no doubt about it, but it can definitely come, right? हाँ, इसका coefficient क्या होगा? That I don't know. Okay, fine. उसका coefficient ले लेते हैं a, right? Now, can you think x minus 3 आ सकता है कि नहीं? Definitely, but yes, I don't know the coefficient, right? Okay. I'll consider the coefficient to be b. Plus, there might be some constant as well. And I'll suppose that to be c. In this way, I can express this polynomial in powers of x minus 3. यहाँ पे पावर क्या है? 2. यहाँ पे 1. यहाँ पे 0. Into 1 है. Right? Okay. So I hope ये तुमने अपने आप लिख लिया हो, right? Okay. अब तुम्हें powers of x minus 3 में एक्सप्रेस तो कर लिया, but there are 3 unknowns, a, b, c. Obviously, you need to find that. I think method is quite straightforward. This is a polynomial. This is a polynomial. 2 polynomials are equal. That means their corresponding coefficients will be same. 2 polynomials are equal, corresponding coefficients has to be same. So देख लो, यहाँ पे पहली टर्म x square, यहाँ पे x square का coefficient ढूंढो, equate करो. Then second term x ढूंढो, coefficient check करो, equate it to 5, and then constant term and do that. A, B, C की values निकालो, hurry up. You've already done this, so I'm waiting. I think you must have done it after. So I'll write x square plus 5x plus 7
इक्वल टू, अब इसको ओपन अप कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर लेती हूँ, राइट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे डेफिनेटली 1 है, राइट। नाउ यहाँ पे ढूंढे, अब एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a। तो a की वैल्यू मिल गई, ग्रेट। नाउ लेट्स talk about the coefficient of x, which is 5. Now look for the coefficient of x here. यहाँ से मिलेगा -6a, देन यहाँ से that is b, और मिलेगा 9, right. Now last but not the least, that is the constant term, so that is 7. Now look for constant term on the right hand side. Yes, 9a minus 3b plus c. Done. Now a की वैल्यू तो मिल चुकी है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, so this is 5 is equal to -6 plus b, और I can say b is equal to 11, right. c निकालना है, a भी पता है, b भी पता है, substitute the value and you'll get the value of c as 31, right. 31 ही आता है, so that means I can express this polynomial as powers of x minus 3 in this manner. a की जगह 1 डाल दिया, b की जगह 11 and c की जगह 31. This is how have I expressed this polynomial in powers of x minus 3. Right? This method I am sure most of you must have done. But there is another method as well. अच्छा, क्लास की बिगनिंग से कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं आप? Synthetic division. Now, I'll ask you to solve the same problem using the method of synthetic division. तुम बोलोगे मैम हमें आता तो है, थैंक यू सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, एब्सोल्युटली राइट। बट अभी कुछ ही देर में आई माइट गिव यू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, राइट। हमारे वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, 6 वेरिएबल्स वाला दे दूंगी मैं, इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व, अ बिट, राइट। सो थिंक अबाउट द न्यू मेथड, सोचो कैसे अप्लाई करोगे। Come on. Oh, I'll write it again. Now, some of you might be like, ma'am, हमें एक मेथड आता, we are happy with that. You do know that in Olympiad you'll get a brand new question, right? In that question, the easy method might work or might not. So you need to have more methods in your brain. इसमें तो मैं भी जबरदस्ती लगा दूं मैं, but still you need to learn the method. It's very important and it's fun too. Yeah. All right. On the board now. On the board. Now, all I'm interested is in the values of A, B, and C. Right? वही निकालना. Now, synthetic division method भी लगाना. Synthetic division method. वो था क्या? Basically, हम polynomials को divide कर देते थे and quotient and remainder मिल जाता था directly. Right? Quotient and remainder. I'll give you a hint. First and foremost, I'll ask you to find the value of C. C की वैल्यू निकालनी है and somehow तुम्हें synthetic division का यूज करना है. Obviously, कोई किसी को डिवाइड तो कर रहा होगा, right? और C की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, यहाँ से कौन सी टर्म डिवाइड कर सकती है? Oh, x minus 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. I can write this as x square plus 5x plus 7 is equal to, मैं यहाँ से x minus 3 कॉमन ले लेती हूँ, राइट। यहाँ पे बचा a into x minus 3 plus b into 1 plus c as it is.
आई थिंक अब दिख जाएगा तुम्हें कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगानी है। क्यों? All I've done is divide this polynomial by x minus 3 and c will turn out to be a remainder. और remainder तो मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ। ध्यान से देख लो, all I've done is divide this polynomial by x minus 3. Obviously this is the quotient and this will be the remainder. तो remainder निकाल लेते हैं and that will be equal to c. So मैंने किसको डिवाइड किया? इस पॉलिनोमियल को. So this is the dividend. So let's write it down. In fact, यहाँ पे लिखते हो. Right. So 1, 5 and 7. And I have divided by x minus 3. यहाँ पे minus 3 है. So that means the number here has to be 3. Right. Now let's apply the method. Now 1 as it is. Then 3 into 1, that is 3. Then add the 2, that is 8. Then 3 into 8, that is 24. Then add the 2, that is 31. And this will be the remainder. This will be the remainder. 31 is the remainder. That means C is equal to 31. C की value आ गई. C is equal to 31. Right? Okay. Now what else? मैं C की वैल्यू अगर यहाँ रख भी देती हूँ, राइट? अब आगे मुझे A and B की तो वैल्यूज निकालनी है. ट्रू. A and B की वैल्यूज निकालनी है. अब मुझे वो रेज नहीं करना चाहिए था. ओके, दोबारा से मेथड कर दे बिकॉज मुझे वो रेज नहीं करना चाहिए था एंड आई रेज्ड इट लाइक अ स्टूपिड पर्सन. राइट. सो हमें क्या किया था? 1, 5, 7 एंड यहाँ पे 3. राइट. दिस इज 1, दैट वाज 8. Oh, 3. This is 8 and that is 24, 31. हमने ये कंक्लूड किया था that the remainder is 31, so that means C is 31. Right? अभी एक चीज तो यूज की नहीं. That was the question. If I divide this polynomial by x minus 3, my quotient is this. और quotient यहाँ से भी आ चुका है. Quotient here is x plus 8. Right? So that means this and this. These are the same. X plus 8 is equal to a into x minus 3 plus b. Try to understand the method. तुम्हें लगेगा मैम it's very cumbersome in this question. We already know the answer. Correct. Learn it in a smaller problem in order to apply it in the bigger one. Right? तो यहाँ पे पहुंचते हैं. Now I am interested in the value of b. b निकालना. तो एक बात बताओ. x minus 3. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Again, if I divide x plus 8 by x minus 3, my remainder will be b. तो निकाल लेते हैं. So again, अब मैं क्या करती हूँ? अब मेरे पास है 1 and 8. In fact, this is help us out. 1 and 8 तो यहीं पर है, right? तो मैं यहीं पे बनाती हूँ. Just look at it, right? अब यहाँ पे x minus 3 था, the factor minus 3. That means यहाँ पे आ जाएगा 3, right? So 1 as it is. Then 3 into 1, that is 3. Then add the 2, that is 11. Remainder turns out to be 11. So b is 11 now. C की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है. वैसे देखा जाए a की वैल्यू दिख रही है हमें. क्यों? a डेफिनेटली क्या होगा? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a. So that means a will definitely be 1. Last step पे you can abuse it. It's fine because दिख रहा है. क्या इसमें आगे क्या लगाऊं? So a is 1. So a आ गया, b आ गया and c आ चुका है. Revise the proof because in the next question you need to apply this. Revise the method. Done? Alright. So do the next one. Using only synthetic division, express
express x raised power 4 plus 2x cube plus 6x square minus 8x plus 4 in powers of x minus 2. Come on. मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन. पिछली बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि लॉजिक क्या था. नाउ जस्ट यूज द डायरेक्ट मेथड एंड गेट द आंसर. Alright, यहाँ पे power 4 है, so that means first can be x minus 2 raised power 4. Coefficient I don't know, so I'm writing it like this. Yeah, so b into x minus 2 whole cube plus c into x minus 2 whole square plus d into x minus 2 plus e. Now there are 5 variables, 1, 2, 3, 4, 5. Obviously, in this case, comparing the coefficients will not be an easy task. That's why I told you, synthetic division is quite an important method. Now, firstly, I would want to find the value of e. E निकालना. Obviously, I am dividing this polynomial by x minus 2. So, सबसे पहले coefficients लिखती हूँ मैं on the board now. अब नहीं करेगा कोई. So, coefficients 1, 2, 6, minus 8, 4. थोड़े गैप पे लिख देते हैं, otherwise. So, 1, 2, 6, minus 8, 4. Right? And my factor is x minus 2. Minus 2. मैं यहाँ पे लिखूंगी 2. Done? Right. So this 1 as it is, right? 2 into 1, that is 2. So add करेंगे 4. 2 into 4, that is 8. Add करेंगे 14. 2 into 14, that is 28. Add up, that is 20. And that is 40. So this is 44. The remainder turns out to be 44. So E, that was the remainder. E turns out to be 44. Done? Next क्या करना था मुझे? इसको further, यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा उसको further किसके साथ डिवाइड करूंगी? x minus 2. अब जब डिवाइड करूंगी, the remainder will turn out to be d. Right? तो ये वाला क्वेश्चन जिससे मुझे मिलने वाला है, उसको मैं 2 से डिवाइड x minus 2 से कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2 आ गया. Right? So 1 as it is, then that is 2, that is 6, that is 12, and that is 26, that is 52, and that is 72. Remainder turns out to be 72. That means D is 72. Done? D भी आ गया. Great. Next, this is the question. Divide करना है x minus 2 से. So यहाँ पे again 2 will be there. Right? Now 1 as it is. Now 2 into 1, that is 2. I'll add the 2, that is 8. 2 into 8, 16. And that is 42, right? Yes. So that will be the remainder. Now, ये remainder मिल गया, that means C की value. C turns out to be 42. Yeah. Now, not last. अभी इसके बाद B मिलेगा. All right. Now, again, I'll divide this by x minus 2. यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा, so that means again यहाँ पे 2 रखते हैं.
So 1 as it is. So 2 into 1 that is 2. यहाँ से मुझे मिल गया 10. Remainder is 10. So that means B is 10. Right? Now, एक रह जाता है A. Even though वहां से दिख रहा है. In fact, यहाँ से भी देख रहा है. X minus 4. Obviously x minus 4. X raised power 4. X raised power 4. यहाँ से भी x raised power 4 मिलेगा. And I can directly say that A is 1. I think this method is quite fast. Seems like it. So obviously I'll replace A by 1 and B by 10 and C by what, 42 and D by 72 and E by 44. That is how you express this polynomial in the powers of x minus 2. That is correctly done. Answer check karo. Check your answer. Alright, great. Write down the next one. Next one is very interesting now. Write down, let f of x equal to a naught x raised by n plus a1 x raised by n minus 1 plus a2 x raised by n minus 2 plus so on till plus an. With a naught equal to 1, ai is equal to plus minus 1 for every I equal to 1, 2, 3, so on till n. Suppose all roots, alpha 1, alpha 2, alpha 3, so on till alpha n of f of x equal to 0. Suppose all these roots are integers. Find the value of alpha square, alpha 1 square plus alpha 2 square plus alpha 3 square plus so on till alpha n square. And hence find all polynomials f of x. Hence find all polynomials f of x. Again an interesting question. It is crackable. ये तुम कर सकते हो, कोई difficult question नहीं है यहाँ. In fact, recently long period में आया भी हुआ है, but first round में जो तुम्हें clear करना है. तो देख लेना. It's not that difficult a question. You can easily do it. So f of x equal to a naught x raised by n, a1 x raised by n minus 1 plus a2 x raised by n minus 2 plus so on plus an. Now a naught is equal to 1. A naught 1 दे रहा है तो मैं already यहाँ पे value substitute कर देती हूँ. Great. Now given ai is equal to plus minus 1. Now the thing is, you need to understand the question very well. पढ़ो question को interpret करो. Come on. अच्छा इसका मतलब समझ आ गया ना. ai is equal to plus 1 plus minus 1, right? ai as in a1, a2, a3, so on till an. These coefficients will either be 1
or minus 1. And given इसकी 0 was integral only. Alright, I think sufficient time. Right? एक बार check कर लेते हैं. Check your solution. Now, I'm interested in the value of this. Right? Alpha 1 square plus alpha 2 square plus alpha 3 square so on till alpha n square. अगर मुझे alpha 1, alpha 2, alpha 3 के बारे में कुछ पता चल जाए, it will be good for me. अगर values भी पता चल जाए, it will be amazing for me. Right? Okay, let's see. Alpha 1, alpha 2, alpha 3. They are nothing but the zeros of this polynomial. Right? And the polynomial is very nice. The coefficients are either 1 or minus 1. Coefficients integral है. Integral coefficients, integral roots. Integral zeros बोलना चाहिए मुझे. Integral coefficients, integral zeros. Do I know something about them? मैंने पढ़ा था कुछ. There is a polynomial, integral coefficients हैं, integral roots हैं. अगर integral roots होंगे, तो कहाँ से मिलेंगे? an. They will be nothing but divisors of an. Remember, जब integral roots होते थे, hidden price से निकालते थे तुम किसको चेक करते थे? Divisors of an को. यहाँ पे भी तो जो roots होंगे, जो zeros होंगे, that will be divisors of an. Now I know that an is either 1 or minus 1. Or right, या तो ये होगा या तो ये होगा. अब 1 के डिवाइजर्स, इंटेग्रल डिवाइजर्स ऑब्वियसली या तो 1 होगा या minus 1 होगा. राइट? अच्छा, minus 1 के डिवाइजर्स either 1 or minus 1. That means since all zeros are integral, all zeros will either be 1 or minus 1. Because वो zeros इसको तो डिवाइड करने चाहिए. एंड ये है ही 1. अगर 1 है या तो उसके डिवाइजर 1 होगा या minus 1 होगा. Or the other case, you can easily say that the roots, that the zeros are either 1 or minus 1. Right? अगर suppose alpha 1 1 है तो 1 square भी 1 होता है. ठीक है, 1 plus alpha 2 मान लो minus 1 है, minus 1 का square भी 1 होता है. So it doesn't matter. मुझे तो स्क्वायर से मतलब है ना. 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर फॉर्चुनेटली सेम है. तो स्क्वायर यहाँ से भी 1 मिल जाएगा, यहाँ से भी 1 प्लस 1 प्लस 2 until यहाँ से भी 1 मिलेगा. अच्छा, ये 1 होंगे कितने? 1 2 3, हाँ, n. 1 plus 1 plus n. n times that here, that means this is equal to n. This quantity is nothing but n. Right? This is the first part of the question. Now he says, find all such polynomials. f of x निकालना है मुझे. Alright? The problem with f of x is a1, a2 के बारे में, as in coefficients के बारे में, I know something. The problem is n. The degree of the polynomials, that I don't know. That means now I'm interested in the value of n. अब मुझे value निकालना है. वैल्यू कैसे निकालना है? वैल्यू ऑफ n. एक बात बताओ, ये तो तुमने कॉमन सेंस से लिखी है n. कैन यू डिराइव दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम समवेयर एल्स? कैन आई? अच्छा, सपोज यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? एंड रूट्स, zeros are alpha and beta. And if I ask you to find the value of alpha square plus beta square, can you do that? Absolutely yes. You can write alpha square plus beta square as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Right? You know the value of this? Relationship between coefficients and zeros.
and you know the value of this again. Now I'm asking you, now there are n zeros and ये वाली टर्म जनरेट करनी है. अच्छा अगर 3 zeros होते और मैं तुमसे पूछती अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, वो क्या आता? अब मैं लिखूं, जिससे तुम बोलोगे मैम फॉर्मूला नहीं आता, बना लो. पहले इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, ये कर लिया, अब इसको भी ऑब्जर्व कर लो. वैसे तो दिख रहा है आंसर, बट नहीं मन करा एक और ऑब्जर्व कर लो, उसमें तो दिख ही जाएगा. चेक करो, राइट योर ओन फॉर्मूला. देख लिया. अब यहां पे लिखो, ये क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी नथिंग बट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस सो ऑन टिल अल्फा n होल स्क्वायर minus 2 into sum of product of zeros taken 2 at a time. यहाँ पे देख लिया होगा तुमने, राइट? So this is alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 alpha 3 plus so on till last will be alpha n minus 1 alpha n. या सीधा बोल सकते हैं sum of product of zeros taken 2 at a time, राइट? ये तुमने लिख दिया, गुड फॉर यू, राइट? अच्छा ये किसके इक्वल था? n के, राइट? अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा है, he's talking of sum of zeros. You can directly use the relationship. Sum of zeros क्या होगा? हाँ, negative of a1 by a, अच्छा ये तो 1 ही है, a नॉट तो 1 ही था, तो by 1, राइट? ये मिल गया, इसका होल स्क्वायर करना, माइनस 2 into, अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम. यहाँ से तो सम मिलना था, यहाँ से मिल जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस 2 into a2 by 1, अगेन लिखने की जरूरत नहीं, राइट? इक्वल टू n. नाउ ये तो ऑब्वियसली a1 अगर 1 भी है तो स्क्वायर करके फिर भी 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 भी है स्क्वायर करके 1 ही आएगा, so no matter what this is 1. minus 2a2 equal to n, right? Now you will be ma'am हमें a2 तो नहीं पता, but a2 होगा क्या, या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा. लेट्स सी, चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है. a2 जब 1 है, राइट? तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 1 minus 2 into 1 equal to n, minus 1 equal to n, ऐसा हो सकता है. ये थी क्या, ये स्क्वायर क्वांटिटी थी ना, स्क्वायर क्वांटिटी का सम -1, और वैसे भी डिग्री -1, मैंने पॉलिनोमियल बोला था ना, दैट वाज अ पॉलिनोमियल सो वी अज्यूम, और वैसे भी स्क्वायर क्वांटिटी -1 डेफिनेटली नॉट, ये केस तो नहीं. a2 1 नहीं हो सकता, दैट मींस a2 हैज टू बी -1. ये क्या बन जाएगा? 1 minus 2 into -1 which will be equal to n. So n turns out to be 3. n is fixed. The degree of the polynomial is 3. n turns out to be 3. Right? Now I need to use this and get the polynomial. Right? एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ. So let's see. All right. So let's do analysis now. सोचते हैं अब तक के क्या पता चल गया हमसे. I know that polynomial degree is 3. Right? And I know that the zeros are integral. In fact, I found out that the zeros are either 1 or -1. And all zeros are integral. Right? You need to write polynomials. Root zeros क्या हो सकते हैं, या तो 1 या -1, डिग्री है 3. Right? First possibility try करते हैं. Suppose I have the 0 1 and multiplicity भी 3 कर देते हैं. Right?
सो मल्टीप्लिसिटी 3 कर दी। यहाँ से मुझे पॉलिनोमियल क्या मिलेगा? हाँ, x minus 1, x minus 1, x minus 1, as in x minus 1 cube, right? Is this the required polynomial? मैं जैसे ही इसको ओपन अप करूंगी इसका फॉर्मूला आता है मुझे, राइट? यहाँ पे 3 वाली टर्म आएगी, एक कोफिशिएंट 3 आ जाएगा, इनफैक्ट 2 कोफिशिएंट 3 आ जाएंगे। हाँ, कोफिशिएंट 3 तो डेफिनेटली नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज मेरे कोफिशिएंट या तो 1 होंगे या -1 होंगे। यहाँ पे तो 3 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, और देखते हैं सेकंड केस। अभी तो मैंने 1 की डिग्री 1 लिया था एंड मल्टीप्लिसिटी 3 ली थी, अब मैं -1 ले लेती हूँ एंड मल्टीप्लिसिटी 3 ले लेती, राइट? फैक्टर मिलने वाला है मुझे x plus 1, x plus 1, x plus 1, x plus 1 whole cube. Do you think this is the required one? Absolutely not. Again, I'll get 3 as the coefficient and I clearly don't want that. Right? Not my type. So, third case. अब तक तो मैं 3 मल्टीप्लिसिटी ले रही थी, राइट? तो मैं ले लेती हूँ 1, मल्टीप्लिसिटी 2 ले लेते हैं। So I have 0, 1 with multiplicity 2 and -1 with multiplicity 1. अब देखें, तो ये मेरे पास बन जाएगा x minus 1 whole square into x plus 1. चेक करें, तो this will be x square minus 2x plus 1 into x plus 1 equal to, यहाँ से open up कर रही हूँ मैं, x cube then x square minus 2x square minus x square then minus 2x plus x minus x plus 1. Now this is a nice polynomial. 1 minus 1 minus 1 1. Great. This is the required one. एक तो मिल गया. In fact और भी मिल सकता है, right? अब ये तो मैंने 1 की multiplicity 2 ली है. There might be a case multiplicity minus 1 की 2 है, right? And 1 की multiplicity 1 है. अब ये वाला पॉलिनोमियल लिख लेते हैं. This is x minus 1 into x plus 1 whole square. So this is nothing but x minus 1 into x square plus 2x plus 1. So this turns out to be x cube. यहाँ से कहाँ गया? 2x square minus x square as in x square. Then x minus 2x minus x and then minus 1. That's your second possible polynomial. सारे केस एग्जॉस्ट कर लिए? हाँ, 3 3 मल्टीप्लिसिटी 2 2, या सारे केसेस एग्जॉस्ट, एंड दीज 2 आर दी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स. You think that the question was difficult? I don't think so. It just needed analysis. तुमने अभी तक CBSE में जो पढ़ा है, it's the application of this. In fact, in Olympiad, such questions will be there. Whatever you have studied till 10th class, that might come in some form or another. तुमने relationship पढ़ने वो आ गया, right? तुमने divisors वाली चीज पढ़ी है वो आ गया. So there is nothing brand new कि crackable नहीं है. अगर तुमने syllabus अच्छे से पढ़ा है, so I think you can do it, right?